डार्क लिप्स इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड इसके रीजंस बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं बट द नंबर वन रीजन फॉर डार्क पिगमेंटेड लिप्स इज वेरी सिंपल। जैसे कि कुछ सालों पहले तक यू वर नॉट रेगुलर विद योर सनस्क्रीन और आज भी कमेंट सेक्शन में मुझे कोई ना कोई जरूर पूछता है कि अगर हम घर पे हैं बाहर नहीं जा रहे डू वी स्टिल नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन। Sun protection has not reached the level of obsession that it should, and which is why people have melasma, people have pigmentation. वैसे ही सालों सालों तक अपने लिप्स की हमने केयर नहीं करी। We've used lip balms generally लिप को प्रोटेक्ट करने के लिए from dryness, chapping, but we haven't given any extra protection to our lips. We've not given extra love to our lips. And अगर आपके lips भी deep pigmented हैं, maybe because of sun damage, maybe because of exposure to some kind of medicine, या आपने कुछ गलत लगा लिया lips पे, some kind of a reaction you may have had to some lipsticks, या another reason smoking which does cause dark lips. इन reasons की वजह से अगर आपके lips dark हैं then today's video is going to be very helpful because I'm going to give you not only lip balms जो आपके lip darkness को reverse कर सकते हैं, I'm going to give you a very specific routine and इसमें जो मैं आपको products बताऊंगी उनमें से एक product I'm pretty sure most people already have. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. Today I'm going to give you a routine, a small demo on how you can reverse lip pigmentation. साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी क्या है वो lip balms जो आप यूज कर सकते हैं during the day, during the night, whenever you want to, जिससे आपका lip pigmentation faster reverse होगा. Now, वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय साइंस पैक डेली स्किन केयर कंटेंट। आई मेक अ न्यू वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिव्स वी कैन यूज ऑन आवर लिप्स सेफली, जिससे आप अपने लिप पिगमेंटेशन को रिवर्स कर सकते हैं। एंड द नंबर वन एक्टिव दैट वर्क्स, it's not vitamin C, it's alpha arbutin. Alpha arbutin serum 2% किसी भी ब्रांड का आप लगा सकते हैं अपने लिप्स पे सेफली, बट रिमेंबर alpha arbutin 2% pregnancy safe ingredient नहीं है. So if you're pregnant or you're nursing then you cannot use it, everyone else can use it. You're going to take, and now I'm going to get into the demo. इसे आपको लगाना है सुबह के रूटीन में and my alpha arbutin is literally over. मुझे डेमो के लिए कोई और सेरम लेना पड़ेगा. Just give me a second. I didn't even realize कि alpha arbutin खत्म हो चुका है, so I'm just going to use this Estee Lauder Advanced Night Repair Serum as a demo, but आपको use करना है alpha arbutin 2%. Alpha arbutin 2% किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं. This is how much you're supposed to use. Literally one drop. That's all you will take on your hand and अपने lips पे आप लगाएंगे. कुछ इस तरह से इसे पैट करेंगे. बहुत केयरफुली करें सो दैट यू डोंट टेक इट इन एंड आप इसे इंजेस्ट ना करें. आप इसके साथ लिप्स को ना लिक करें. डोंट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स. वेट फॉर अबाउट अ फ्यू मिनट्स. जब ये ड्राई हो जाएगा इसके ऊपर आप लगाएंगे अपना डीप पिगमेंटिंग लिप बाम, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी. ये प्रोसेस अप्लाइंग अल्फा आर्बुटिन सेरम आपको करना है रोजाना, every single day in the morning. So as you finish your morning skincare routine, आप अपना अल्फा आर्बुटिन सेरम लगाएं, इसके ऊपर आप लगाएं अपना लिप बाम एंड दैट्स अबाउट इट. रात के रूटीन में जो एक प्रोडक्ट आप में से आधे लोगों के पास है, आई एम प्रीटी श्योर, आपको अपने लिप्स पे आफ्टर यू फिनिश योर रूटीन यू नीड टू यूज a retinol based eye cream. अब retinol based eye cream क्यों, retinol serum क्यों नहीं, retinol क्यों नहीं? Because आपके lips बहुत gentle होते हैं. So if you use something very strong, obviously आपको peeling होगी, irritation होगी, आपके lips शायद और dark हो जाएं. So you need to use something very mild. So a retinol based eye cream, not a retinal eye cream. So I'm not saying use the minimalist one. Try and use, जैसे minimalist भी बहुत लोग use करते हैं, they like it. But I would always recommend a retinol based eye cream. किसी भी ब्रांड की, and just because you're using this on your lips, try and look for something little affordable, something which is low concentration. L'Oreal, Neutrogena, any of these kind of supermarket brands, इनका आप retinol based eye cream लगा सकते हैं अपने lips पे. कितना लगाना है, that's what I'm going to show you. But first let me wipe off alpha arbutin because I'm not going to layer alpha arbutin and retinol on my lips. So I've cleaned my lips. और अब हम लगाएंगे एक रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम. डेमो के पर्पस के लिए मेरे पास ये कोरियन ब्रांड है हेमिश, उसकी मेरे पास ये मरीन 0.1% रेटिनॉल आई क्रीम है जिसमें नाइसिनामाइड भी है. हम लेते हैं जितना अमाउंट आइज के लिए उससे भी कम. सो यू लिटरली नीड टू टेक अ डॉट. कैन यू सी, दिस इज हाउ मच यू नीड.
and this is more than enough. And that's it. Wait for it to dry. And इसके ऊपर definitely you can use a lip balm. But अगर आप dryness prevent करना चाहते हैं, you want your lips to be super juicy hydrated, कोई भी अच्छा thick occlusive moisturizer लगाएं. La Roche-Posay का Plast Physiogel, any thick ceramide moisturizer जो भी आपके पास है, apply a moisturizer. जब वो absorb हो जाएगा उसके बाद lip balm लगाएं. Because lip balms are oil based, right? वो आपके लिप्स को डीपली हाइड्रेट नहीं कर सकते उतने अच्छे से जितना एक मॉइस्चराइजर करेगा. सो अप्लाई अ थिक ओक्लूसिव क्रीम और मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर आप लगाएंगे अपना लिप बाम. दिस रूटीन इफ यू फॉलो, एंड ये आपको कितनी बार करना है, आई वुड से नॉट मोर देन 3 to 4 times a week. इफ यू कैन डू इट एवरी सिंगल डे, बट 3 to 4 times a week इज मोर देन इनफ. इसके अलावा एक और चीज आपको करनी है, एंड ये जो एक और हैक है इसको मैं YouTube shorts पे दिखा चुकी हूँ. I've shown it to you in an Instagram video. This hack is not just great for lip pigmentation. ये amazing है, especially अगर आपके lips flaky chapped रहते हैं. मतलब बहुत lip balm लगा रहे हो, लगाए जा रहे हो, फिर भी if you feel that your lips are flaky chapped, then this hack is going to work really well for you. And ये hack है कि हम अपने lips को exfoliate करते हैं mildly with a glycolic acid या कोई भी AHA. शर्त है कि वो टोनर हो या टोनर पैड हो, एंड उसके ऊपर आप लगाएंगे हल्का सा hyaluronic acid, serum, mucin, whatever else, and a moisturizer. Let me just show that to you. In the ordinary glycolic acid toner, I've taken a tiny amount, and I'm just retinol भी remove हो रहा है, and I'm just removing this glycolic acid. आपके लिप्स अगर कहीं particularly ज़्यादा डार्क हैं, जैसे मेरे को ना कॉर्नर्स में कभी कभी लगता है कि डार्क है, इस तरह से just cleaning your lips with the glycolic acid. इसके बाद आप hyaluronic acid लगाना है तो definitely you need to mist your lips. I just use this Tatcha spray, and I'm just going to use a little bit of hyaluronic acid. Now just let it stay on your face. इसको आपके लिप्स में absorb होने दें, and it will take about 2 minutes. इसके ऊपर you can apply a thick moisturizer, occlusive, Cicaplast, whatever else. This process don't do more than once a week. So the glycolic acid exfoliation of your lips once a week. Retinol eye cream 2 to 3 times a week, even 4 times a week. Alpha arbutin every single day. You follow this up, and it doesn't matter how dark pigmented your lips are because of sun damage, because of whatever else. These are going to lighten over a period of time. I have seen some great results with men who have like deep dark smoker lips. उनके उस लिप्स पे ये काम कर जाता है, आपके लिप्स पे 100% काम करेगा. Now let's quickly talk about lip balms. So all my life, and I'm very embarrassed to tell you this, the only lip balm जो मैं sun protection के जैसे use करती थी was the banana boat one. I still have it somewhere. The banana boat one, okay, and it is अब मैं use करती थी because I wanted an SPF, especially here Dubai में summers में I always like to use something which has SPF. And guys, it's like a wax stick. But of course, मेरे को दिन में लिपस्टिक लगानी होती है तो मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था. But in 23-24, I discovered some really nice lip balms, which are great because उनमें SPF 50 है. Obviously, they have other ingredients जो आपके lip को lighten करने में काम करते हैं, like niacinamide, kojic acid. Now, I've tried a lot of them. I have for you 3 recommendations. My number one recommendation is from Wishcare, and Wishcare में भी 2 versions आते हैं, एक tinted, एक plain. I personally prefer the plain version. Though texture wise, everything wise, they are both very similar, but somehow I just like the plain one. आपको जो use करना है आप use करें. This is great because it has kojic acid. And one that I really like is by Deconstruct. That is also a supremely hydrating lip balm जिसमें बहुत सारे ingredients हैं that can lighten your lips. And the third one that I tried, which is my least favorite because I'm not a big fan of the texture, the third one, which is my least favorite, is the one by Dermaco क्योंकि इसका मुझे texture इतना अच्छा नहीं लगा, but that also has 1% kojic acid. ये हैं आपके 3 lip balm options which will give you sun protection, and they have lightening brightening ingredients that will actively work
on your pigmentation of the lips. When it comes to lightening brightening ingredients, I'm not a big fan of niacinamide because niacinamide अकेले कभी काम नहीं करता. Even if you look at our pigmentation routines, हम हमेशा niacinamide को pair करते हैं with a different ingredient. The only places where I see niacinamide working alone is the La Roche-Posay niacinamide because it has MELA-B3, which is like a hybrid molecule जिसमें और भी बाकी सारे ingredients का थोड़ा थोड़ा benefit है. Other than that, I don't see niacinamide totally working alone, and which is why अगर एक lip balm में सिर्फ niacinamide होता है, I don't think it works as well. But these three options work really, really well. But if you want faster results, you want better results, then I highly, highly recommend कि आप अपने lip balms तो लगाएं ही. This is something you need in the morning. I personally use this any time of the day because it's okay. I mean, I can use a SPF lip balm even at night. I use this at any time of the day, but आप definitely दिन में तो उसको लगाएं ही लगाएं, but साथ ही साथ follow the rest of the routine. Alpha arbutin on your lips 7 days a week, retinol based eye cream 3 to 4 times a week, once a week glycolic acid, and each time you apply any of these actives, you will use a thick occlusive moisturizer. Video पसंद आई, helpful लगी? If yes, let me know in the comments. I will see you tomorrow with a brand new video. Thank you so much for watching. Bye.